Defence Minister Rajnath Singh has now made a major claim, saying that Jawaharlal Nehru wanted the Babri Masjid to be built using public funds, but it was Sardar Patel who actually opposed it. Now, speaking at a Unity March event near Vadodara, Singh said that Nehru's proposal was firmly opposed by Patel, whom he praised as a true liberal who never believed in appeasement politics. Now, he also alleged that after Patel's death, when citizens collected money for a memorial, Nehru suggested that the funds be diverted to wells and roads, something Singh called absurd, saying that it showed attempts to erase Patel's legacy. In fact, he went on to give credit to Prime Minister Narendra Modi for restoring Patel's legacy through the Statue of Unity and said that the government has followed Patel's strong, decisive approach right from Operation Sindoor to the abrogation of Article 370. जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे कहने। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा कि पुनर्निर्माण का सवाल उठाया, बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी तरह मेरे बहन भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है, सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। And now, viewers, India and Israel of weapon industries, the leading small arms manufacturer, have now initiated talks to explore integrating the revolutionary Arbil computerized system for Indian forces. Now, this system is the world's first fully computerized small arms fire control system. It is designed to enhance accuracy, the rate of a lethal strike, as well as the decision making for soldiers in complex combat scenarios. This system employs advanced sensors, real-time ballistic computation, as well as a target acquisition technology to optimize the fire solutions. Now, it also monitors the weapon movement and trigger status, releasing rounds only when the probability of a hit is very high. Now, this system can be integrated with any small arms platform without dedicated optical components as well. Now, Indian armed and security forces already use a wide range of IWI weapons, including the Traver and the X-95 assault rifles, the Galil sniper rifles, as well as the Nijev light machine guns. Now, IWI, in fact, has been producing barrels in India and is open to deeper technology collaboration under India's Make in India initiative. Defence Minister Rajnath Singh has now made a major claim, saying that Jawaharlal Nehru wanted the Babri Masjid to be built using public funds, but it was Sardar Patel who actually opposed it. Now, speaking at a Unity March event near Vadodara, Singh said that Nehru's proposal was firmly opposed by Patel, whom he praised as a true liberal who never believed in appeasement politics. Now, he also alleged that after Patel's death, when citizens collected money for a memorial, Nehru suggested that the funds be diverted to wells and roads, something Singh called absurd, saying that it showed attempts to erase Patel's legacy. In fact, he went on to give credit to Prime Minister Narendra Modi for restoring Patel's legacy through the Statue of Unity and said that the government has followed Patel's strong,
decisive approach right from Operation Sindoor to the abrogation of Article 370. जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे कहने। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का 1 कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी तरह मेरे बहन भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से 1 पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। And now, viewers, India and Israel of weapon industries, the leading small arms manufacturer, have now initiated talks to explore integrating the revolutionary Arbil computerized system for Indian forces. Now, this system is the world's first fully computerized small arms fire control system. It is designed to enhance accuracy, the rate of a lethal strike, as well as the decision making for soldiers in complex combat scenarios. This system employs advanced sensors, real-time ballistic computation, as well as a target acquisition technology to optimize the fire solutions. Now, it also monitors the weapon movement and trigger status, releasing rounds only when the probability of a hit is very high. Now, this system can be integrated with any small arms platform without dedicated optical components as well. Now, Indian armed and security forces already use a wide range of IWI weapons, including the Traver and the X-95 assault rifles, the Galil sniper rifles, as well as the Nijev light machine guns. Now, IWI, in fact, has been producing barrels in India and is open to deeper technology collaboration under India's Make in India initiative.